guys, I'm Muskan Arora and welcome to my channel. So I don't know from where to start. This feels so surreal and I'm really excited about my first video. I'm gonna dedicate it to my first love, which is makeup. So for those of you who don't know, I'm a professional makeup artist and I wanted my first video to be about makeup. Today's video will be about a very simple beginner friendly makeup look which I'm gonna teach you guys. बहुत ही सिंपल लुक होगा, बहुत बिगिनर फ्रेंडली होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्किन प्रेप. आपको ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. अगर आपका स्किन प्रेप बहुत अमेजिंग होगा ना तो आई एश्योर यू कि आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा. सो माई स्किन इज टुवर्ड्स नॉर्मल टू ड्राई, तो मैं उसके अकॉर्डिंग स्किन प्रेप करूंगी, बट आई गिव यू सजेशंस ऑयली स्किन. सो आई एम गोना अप्लाई माय फेवरेट मॉइस्चराइजर व्हिच इज दिस डॉट एंड की सेरामाइड मॉइस्चराइजर. इट्स अ रियली नाइस non-sticky moisturizer for normal to dry skin. अगर आपकी oily skin है तो you can use some gel based moisturizer from Dot & Key like vitamin C and other gel based moisturizer. But if you have normal to dry skin, this moisturizer work wonders. So I'm gonna apply my moisturizer. So what I do, because मेरी अंडर आईज ना बहुत ही ज़्यादा क्रीज होती है, so I use this bliss under eye cream which really hydrates my under eyes. And ये अंडर आई क्रीम मुझे मेरे डर्मेट ने सजेस्ट करी थी for my dark circles. Obviously you can see, and as my under eyes are really dry, so I'm gonna apply it. I like to do, I just hydrate my lips as well. सो तब तक मेरा स्किन केयर भी थोड़ा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड मेरे लिप्स प्रेप हो जाएंगे जब तक मैं लिपस्टिक लगाऊंगी. सो आई यूज द लिप मास्क फ्रॉम अर्थ रिदम. रियली हाइड्रेटिंग, मतलब बहुत ही अच्छा लिप मास्क है. मैं रोज रात को सोने से पहले ये मास्क लगा के सोती हूँ, सो दैट जब उठो ना तो बहुत ही अच्छे प्लम हाइड्रेटेड लिप्स लगते हैं. यू कैन ऑलवेज अप्लाई अ नॉर्मल लिप बाम, Vaseline, anything, just make sure आपकी स्किन ना हाइड्रेटेड हो. Now what I like to do is I apply my primer. So बहुत लोग ये स्टेप भी स्किप कर देते हैं. So it's an optional step. You can use it or if you want to skip it, क्योंकि beginners मेकअप बहुत ज़्यादा ना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इनिशियली कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करने. You can skip it. It's okay to skip primer. बट अगर आपको चाहिए कि आपका मेकअप बहुत लॉन्ग आवर्स स्टे करे, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग, यू कैन यूज अ प्राइमर. It also creates a barrier between your skin and makeup and it protects your skin and helps your makeup to stay. So you can use it. I suggest you to use it, but it's an optional step. Use this My Glam Tinted Brightening Primer. So I apply very little. I just apply it on my nose and my cheek area. So I have little pores on my cheeks and my nose. So मैं प्राइमर मोस्टली इसी एरिया में अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ. रेस्ट ऑफ इट माई मेकअप सिट्स वेल. सो एज आई एम डन विद माई प्राइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज माई कलर करेक्शन. सो एज अ बिगिनर्स मेकअप आई एम गोना टीच यू कि हाउ टू करेक्ट योर डार्क सर्कल्स and your pigmentation, your spots, things like that. So for that you have to use a orange color corrector. So I use color correctors and I also use my lipsticks as my color correctors. I have these cream lipstick palette and I use it and it works wonders. So जरूरी नहीं है कि आपको हर एक प्रोडक्ट ना परचेज करना है कि ये भी ले लो वो भी ले लो. No, whatever you have you can use. So I'm gonna use this orange lipstick as the color corrector and I'm gonna use this PAC 219 brush. See, बहुत ही लाइटली मैं डार्क कर रही हूँ. एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना है. एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट लगा दोगे ना ब्लेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो धीरे करके ऐड ऑन करते रहो. देखो आपको कितना चाहिए, कितने से आपका एरियाज कवर हो रहे हैं. So as you can see, I have this pigmentation around my mouth and mostly Indians के होती है. So you can use the same color corrector. The next step is my base. I'm going to use a drugstore foundation today. Otherwise, I also use MAC on daily basis or either this. I gravitate between MAC and this Maybelline. So I use this Maybelline Super Stay foundation. It's a very nice foundation. मुझे बहुत ही foundation personally पसंद है. I use this
Swiss Beauty foundation brush. It's a really nice buffing brush for everyday basis. I'm just gonna take like a pump. Yeah, and this shade is warm nude. So warm nude is my summer color and classic ivory is my winter shade. So I gravitate between these two shades. So I'm just gonna apply this foundation and मैं ना brush से ही apply कर देती हूँ and then I quickly blend it. So downward motions में मैं apply कर रही हूँ. Blends so nicely and I applied like a very thin layer. Taking a damp beauty blender, this is from Pat. I'm just gonna pat it in. Now my base is done. I like to keep it very sheer, very natural. I'm gonna move on to concealer. And trust me, when I talk about concealers, I have such a big problem finding a nice drugstore concealer. High end में ना मेरे को बहुत सारे concealers पसंद हैं. But for everyday basis मुझे एक अच्छा coverage का concealer चाहिए था जो dry out ना करे because my under eyes are really dry and I'll show you. I am in love with this L'Oreal concealer. I love this concealer. Such a nice product, doesn't crease, doesn't dry out my under eyes, has a nice coverage and it's really affordable. And I really like the bond also. It's a very close dupe to my Tarte. I'm just gonna apply on my inner corners and towards the outer edges of my eye, on my mouth area. Wherever I think I need a little more coverage, I have applied the concealer there. And this is my shade. This is 312 Amber. This is not light, not dark, just my shade. Like, because I have done color correction, तो ये grey नहीं होगा. If you feel आपको color correction नहीं करनी, then just use a darker shade of concealer. And I am blending it with my PAC 229 brush. And I'm using this lifting technique to see I have lifted my eye. Obviously I'm gonna blend that line, but it really gives a nice lifted effect. And now I'm gonna take my beauty blender and I'm just gonna spray it with a little toner, nicely damp, and I'm just gonna blend my under eyes. So what I do, I always take my brush first and then I blend it with my beauty blender just to make sure कि वहाँ पे ना कोई brush strokes नहीं है. And brush से I feel under eyes crease कम करता है and also ज़्यादा अच्छी coverage भी देता है. That's what I believe. And that's what I do. Even on my clients, I always use the brush first and then I use my beauty blender. Now moving on to the powders. So first and foremost, I set my under eyes really quickly so that it doesn't crease. Because मेरी under eyes crease बहुत जल्दी हो जाते because I have fine lines over there. And after trying multiple products, multiple powders, it's part of my job to try new products. But this powder really suits me. It's K Beauty powder, K Beauty Loose HD setting powder in the shade Banana. This sets my base really nicely और ना best part crease नहीं करता. जो powder crease नहीं करता, I'm good with it. And this DIY powder puff. DIY is a store in Delhi which I personally love. बाकी आप ये velvet puff ना कहीं से भी ले सकते हो, पैक के भी ले सकते हो, Amazon पे भी मिलते हैं. And इनसे बहुत help हुई है मेरे under eye पे. इन puff से set करने के बाद मेरे बहुत ही under eye कम crease कर रहा है. Making sure there are no lines. अगर आपको भी issue है ना under eye creasing का, try to use this puff. And I bake very little. बहुत ज़्यादा bake नहीं करती मैं because मेरी under eyes काफी dry हैं. बहुत dry under eyes हैं. I don't know how. You can see मैंने हल्का सा powder apply कर दिया. I'll give it few seconds and then I'll remove my this part. The rest of my face अभी मैंने set नहीं किया because I'm gonna use a lot more cream product. So this is my favorite lip cream, cheek cream. So it's from a Korean brand. I believe it's Misha. Yeah, Misha Dare Lip Tint in the shade, I don't know, in the shade 13.
and it's super creamy. I love this product. मुझे ना इसका और कोई शेड मिल भी नहीं रहा है अभी, सो आई लव यूजिंग इट. अगर आपके पास लिप टिंट्स या लिप क्रीम्स हैं, आप उसको चीक टिंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो. अगर क्रीम ब्लशेस नहीं भी है ना, डोंट वरी, जस्ट यूज एनी ऑफ योर लिपस्टिक. सो व्हाट आई डू, I take some product on back of my hand, and with the same brush, this is the same foundation brush that I used, I'm just gonna take few my product and light the very light hand. एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशली क्रीम प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, क्रीम ब्रशेस बाय करने हैं. फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जब मैंने मेकअप स्टार्ट भी किया था ना, सीखना भी, माई टीचर यूज टू टेल मी कि वाई डोंट यू यूज लिपस्टिक फॉर क्रीम ब्लशेस. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बाय करो. ट्राई टू यूज प्रोडक्ट्स जो आपके पास ऑलरेडी है. दिस इज न्यू ट्रेंड ना कि आपको ये भी बाय करना है, वो भी बाय करना है. दैट्स नॉट ट्रू. इफ इट वर्क्स फॉर यू, इफ यू लाइक कलेक्टिंग मेकअप, देन इट्स फाइन. बट अगर आपको चाहिए कि आपके पास जो भी घर पे प्रोडक्ट्स हैं आप वो यूज़ करो, देन यू कैन डू इट. आई शो यू. दिस इज माई L'Oreal lipstick in the shade I choose. It's a really nice shade. So I'm just gonna take on back of my hand. कभी भी ना डायरेक्टली मत अप्लाई करो, पैची हो जाएगा. And I'm just gonna use it as a blush. See how pretty it's looking. कोई कह सकता है नहीं है क्रीम ब्लश. All about how you use a product ना. So you can use your liquid lipsticks, your creamy lipsticks, and कई बार ऐसा होता है ना, हम ऑनलाइन लिपस्टिक्स मंगाते हैं, उनका शेड सही नहीं आता. I always use them as my lipsticks. Always. Do not waste product. And I'm just gonna blend it with my beauty blender. I love how it's looking. And जो भी मेरे अंडर हाउस से पाउडर बचा है, I'm just gonna brush it off. So now the contour. So this is also an optional step. I like to do it because I have a round face, so I like to give it a little cut, and you can also do it as a, it gives a nice shape to your face. So I'm gonna use this NYX palette. मैं ना ये पहले मेरी मेकअप वैनिटी में यूज़ करती थी, बट एज आई टोल्ड यू, एज अ फ्रीलांसर बहुत सारी पैलेट्स ख़राब हो जाती हैं, इसका प्रिंट हट गया. प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, बट क्लाइंट्स के आगे अच्छा नहीं लगता है इससे प्रोडक्ट ले जाना. तो व्हाट आई डू, आई यूज़ इट फॉर माई सेल्फ. मैं इनको कभी भी अपनी पुरानी पैलेट्स को फेंकती नहीं हूँ until and unless they are expired. एक्सपायर्ड है तो obviously I'm not gonna use it on myself. बट अगर नहीं है वो एक्सपायर्ड, तो आई यूज इट ऑन माई सेल्फ. क्लाइंट के आगे मैं नहीं ले जाती. So I'm gonna use this my NYX. As you can see, it's a beautiful palette. अगर आपको एक multi use palette purchase करनी है ना, you can try this. I'll link it in the description box. So this has contour, 2 shades. It has brow colors. It has 2 highlighters. It has eyeshadows, matte, shimmer as well. So it's a really nice palette की all in one palette है जिसको आप बहुत ही अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो. आपको एक ही palette चाहिए ना कोई, इसमें सब कुछ हो. ट्रैवल फ्रेंडली बहुत है. आई यूज टू ट्रैवल विद इट अ लॉट. मैं जब भी कहीं ट्रिप वगैरह जाती ना, आई यूज टू कैरी दिस पैलेट क्योंकि मेरा इसी में काम हो जाता था सब चीज़ों का. आई फील इसमें अगर ब्लश भी होता ना तो ये मेरी ड्रीम पैलेट होती, बट इसमें ब्लश नहीं है, बाकी सब है. यूज दिस स्विस ब्यूटी एंगल्ड ब्लशर ब्रश. इट्स अ ब्लशर ब्रश, but I use it as my contour brush as well. So I'm gonna take this lighter shade of contour, dab it a little, and आपके जो hollows होते हैं ना फेस के, उस पे आपको अप्लाई करना है, just to lift it. I'm not doing it much, just a little bit. A little on my forehead, not much. I don't use much contour, and a lot on my jawline. So I'm going to do my brows. So what I like to do, I really have bushy brows. I take this Morphe brush. It's 153. It's a Morphe brush. I take my spoolie and I brush my brows upwards. You can instantly see the difference. I have bushy brows. See? Just lift it up. Lift it up. And if you want to fill, you can use the same palette. I'm gonna take this darker brown color and I'm just gonna fill in the area.
I do a extra step because बहुत बार ना जब भी आपके ब्राउज के बाल नीचे की तरफ होते हैं तो वो लिफ्टेड लुक उतनी देर नहीं रह पाता. फॉर दैट आई यूज दिस लैश मस्कारा. It's from Elf. It has two sides. One has the lash mascara and one side has brow mascara. I'm gonna use this brow side and I'm just gonna brush my brows upwards. And ये पूरा दिन ना मेरे brows को set रखेगा, which is a really nice thing. So now I'm gonna do my eyes. मैं बहुत ज़्यादा darker eyes नहीं करूँगी, बहुत ही everyday kind of look का हम कर रहे हैं. So I'm gonna keep my eyes very very natural. For the eyeshadow, I'm gonna do a very little eyeshadow, बहुत ही minimal. Very beautiful Miniso brush. I got it from Miniso because of the color. I really like how it looked, so I picked it up. I'm a hoarder for cute things. So I'm gonna take this light brown color from the same palette. See, as I told you, you don't need to buy multiple things. And I'm just gonna apply it all over my eyes. I'm gonna curl my lash. This is a really important step. It really opens up your eyes. अगर आप मस्कारा से पहले हल्का सा lash curl कर लो ना, it really opens up your eye. I'm just gonna from root to the top. And I'm gonna use my Elf mascara. It's a length and volume mascara, and मुझे दोनों ही चाहिए. So I'm gonna use this mascara. You can use any mascara. I really like the wand because it's small, so I can move it according to my wish. So I really like this mascara. Just wiggle the wand a bit when you apply it from the root to the top, and mascara really makes a difference. See, दोनों eyes में difference. I love putting mascaras. You can go in with second 2-3 coats as much as you like. I like to go with like 2 coats. And what I also do, I put it on my lower lashes as well. And now I'm gonna do my lips. For my lips, I'm gonna MAC lip pencil. It's in the shade Soar. I love this lip pencil. And इसका closest dupe I have PAC का एक lip shade है. याद नहीं है shade. I'll mention it in the description box. You can check it out. It's a really lovely pencil. So I'm gonna start lining my lips. Finish this makeup look, I'm gonna quickly use my MAC Fix Plus. It's a tester product. I got it with my big MAC Fix Plus, and it's really easy to carry, to keep it in my drawer, so I keep it for my everyday use. So I'm just gonna spritz it all over my face. Amazing. It also melts the makeup. So I'm gonna quickly do my hair and then come back. This is the final look. I hope you guys liked it, and it was really fun creating this look. It's a very simple basic look, and I'll be coming with many more looks. Not just beauty, I'm gonna come fashion and so many things. More such videos, guys. Like, share and subscribe. Bye.